मैं ये आपसे कह रहा था कि आज मेरे आने की वजह ये कहाँ गए, अच्छा ओ रहे। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए, बेचारे जिसको कमरे में सबसे ज्यादा स्ट्रेस हो, समझ लो उसकी इज्जत सबसे ज्यादा लगी हुई है। तो मैं कोशिश करूंगा कि वी कुड सपोर्ट यू थ्रू द डे। बट लेडीज एंड जेंटलमैन, जिस तरह मैंने आपसे कहा, मेरा नाम विनीत पंछी है, यू कैन कॉल मी पंछी। मैं देहरादून में रहता हूं और आज मैं शुरुआत करना चाहता हूं किसी एक ऐसी चीज से जो मैं आपके लिए लिख के लाया हूं। तो मुलायजा फरमाइए, और जब भी मैं बोलूं मुलायजा फरमाइए, आप कह सकते हैं इरशाद, बस इतना ही चाहिए मुझे। तो एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं, मुलायजा फरमाइए। वाह, और क्या चाहिए। और यहां पे जितने लोग हैं जनाब, लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको ऐसा लग रहा है कि हम आपको नहीं सुन सकते। दूसरा, सब अपने फोन्स निकालिए। अगर आपके फोन का कोई नाम है और आप उससे अपनी बीवी से ज्यादा बात करते हैं तो उसको बोलिए मैं थोड़ी देर में हाजिर होता हूं, उसको साइलेंट कर दीजिए। वो जो सिर्फ तुमको सुनाई देता है, वो जो सिर्फ तुमको सुनाई देता है, आंखें खुली हों या बंद हों, साफ साफ दिखाई देता है। वो जो हर रोज तुम्हारे कानों से टकराता है, वो जो हर रोज तुम्हारे कानों से टकराता है, उछलता है, झटपटाता है, बार बार एक ही राग दोहराता है, जिसको तुमने पैदा किया, जिसको तुमने पैदा किया, शक्ल दी, आंखें दी, नाम दिया, वो जिसे तुमने कभी दुनिया से छुपाया, कभी नजरअंदाज किया, कभी बुलाया, जगाया, सुलाया, दिल के कोने कोने में बसाया, सबकी नजरों से बचकर सहलाया, खत्म होने से बचाया, वो ख्वाब है तुम्हारा, वो ख्वाब है तुम्हारा। इस ख्वाब के लिए कहां तक जाओगे, इस ख्वाब के लिए कहां तक जाओगे, कैसे पालोगे, क्या दिखलाओगे, किसको साथ लोगे, किसको साथ लोगे, किसको साथ रखोगे, किसको छोड़ जाओगे, इस ख्वाब के लिए क्या क्या करोगे, कहां तक जाओगे। इस ख्वाब की सांसें, इस ख्वाब की जान तुम्हारी हथेली पे पड़ी है। इस ख्वाब की सांसें, इस ख्वाब की जान तुम्हारी हथेली पे पड़ी है। ये बड़ा हो गया ना तो अपनी हथेली पे तुम्हें उठाएगा। ये ख्वाब है, ये बड़े कमाल की चीज है। जितना तुम निभाओगे ये ख्वाब कहीं ज्यादा निभाएगा। तो ख्वाबों की आवाज सुनो, ख्वाबों की आवाज सुनो। ये कहते हैं चलते रहना, चाहे जितनी भी आग मिले, अब जो भी हो जलते रहना, टेढ़ी मेढ़ी इन राहों पर जितना भी हो चलते रहना। ख्वाबों की आवाज सुनो, ये कहते हैं चलते रहना। बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने ये छोटी सी नज्म इसलिए लिखी विशाल भाई के लिए कि इन्होंने जब मुझे समझाया कि हम इस टाइप के हमारे स्ट्रक्चर में, जीतों में हम करते क्या हैं, अल्टीमेटली पार्टनरशिप का मतलब क्या है। पार्टनरशिप, मेरी जो बेगम है वो साइकोलॉजिस्ट है, तो मुझे सुबह शाम सुनना पड़ता है। वो कहती है कि पार्टनरशिप का मतलब है कि मैं आपकी ग्रोथ में उतना ही इंटरेस्टेड हूं जितना आप मेरी ग्रोथ में हैं, तब तो हम अच्छे पार्टनर हुए, वरना मतलब हो ही जाती हैं चीज़ें। दूसरी चीज़ वो ये कहती है कि इंटीमेसी होनी चाहिए किसी भी ग्रुप में, और इंटीमेसी का मतलब है कि हम आपस में एक दूसरे के साथ सेफ महसूस करते हैं। इट्स नॉट जस्ट फिजिकल इंटीमेसी जो हमें लगता है। और तीसरी चीज़ है कंपेनियनशिप, कि हम आपस में एक दूसरे की कंपनी एंजॉय करते हैं। तो अगर आप अच्छे पार्टनर हैं, अगर आप इंटीमेट हैं, आप सेफ महसूस करते हैं, और आपकी कंपेनियनशिप इस लायक है कि आप एक दूसरे के साथ बैठ के हंस सकते हैं, गा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, मेरे जैसे लोगों को सुन सकते हैं, तो इसका मतलब आप अच्छी जगह पे हैं। आज की शुरुआत करने से पहले मे आई आस्क ऑल ऑफ यू टू स्टैंड अप फॉर एग्जैक्टली 20 सेकेंड्स, जस्ट टू, और अपने राइट हैंड को उठाइए जितना दूर जा सकता है। हम सब योगा के आजकल हो गए। टेक इट वेयर इट टचेज योर बैक एंड से शाबाश। बैठिए, बहुत मुश्किल था यहां तक पहुंचना। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टू ऑल ऑफ यू फॉर कमिंग हियर एंड एवरीथिंग। हमेशा की तरह वी विल आस्क यू टू रिमूव योर शूज before we get into the नमोकार मंत्र, and that is how we will start. एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए. Give yourself a big round of applause and then remove your shoes and we'll go into the नमोकार मंत्र. नमो सिद्धांग, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसाहुरं, सर्वसाहुरं, ऐसो पंचनमोक्कारो सर्वपापप्रणाशनं, मंगलार्णं च
थैंक यू, प्लीज पधारिए। सबसे पहले मैं आमंत्रण देना चाहूँगा विशाल जैन को। क्विक इंट्रोडक्शन अबाउट विशाल. Some of you know him well. He's the managing director at Accenture, leading global forecasting and planning with a strong focus on applying AI and in finance. With prior experience as CFO at American Express India, he has driven large-scale transformation and product innovation across domains. अगर इनके बारे में आप बहुत ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप गूगल पे जाइए, लिखिए विशाल जैन Accenture, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। विशाल, इतना काफ़ी है आपके लिए या मैं मतलब जो 1.5 पेज आपके बारे में भेजा गया सारा पढ़ूं? थोड़ा सा और सुन लेते हैं. He's a chartered accountant, CPA, company secretary, MBA from FMS Delhi. Vishal combines deep financial expertise with strategic foresight. Vishal is also the convener of JPF Mentorship platform, and we would ask him to come and start the session today. Aye, sir. And do give people applauses. Aye, please. Jai Jinendra, Savi ko. I think we are running 5 minutes late. We are waiting for our Jito Apex senior leadership. So I will, and I am not as expert as Vineet to hold the audience. So I'll have a safer choice. Probably we'll just play the video of our mentorship platform, our journey as a whole. That will give you a flavor of what we are trying to do over the years. And maybe just bear with us while we have senior leaders of Jito. They are here. And then we can take it forward. Okay? So, Priyanka, if you can play that overall video. Yeah, thank you. Good morning and Jai Jinendra. Good morning. I really welcome you from my heart to this special day for us at JPF. I'll request everyone to settle down at the back. There is always going to be a time to share and exchange cards. There'll be plenty of time. So, Jai Jain again. My name is Vishal Jain. I work in Accenture and again have about 30 years of corporate experience across many multinational companies and initially in Indian companies. So that's the professional side. But in personal capacity, 8 years back I joined Jito. And the question was, what's in for me as a corporate professional? But that was a good wisdom that my Pufaji was already part of Jito and he advised. And I really must say that as corporate professionals, sometimes you need some bit of fire and a different line of thinking, which is what I got from Jito, meeting so many dynamic leaders out here. And many of them are sitting in this room and they all run huge businesses. So really, I'm thankful for the journey so far. I want to really welcome all of you. I want to welcome all the participants who are prioritizing this Saturday to spend with us. I do want to welcome our 25 top corporate leaders. If you can give a big round of applause for them. We have a pleasure of having them here. Just so you know, we have 70 global leaders across many different parts of the world, including about 45 of them are in India, 25 outside. But I must say that is just a very tip of the iceberg in the sense that there is so much of intellectual power in the corporate community which we can really tap, and as Jain professional they are doing amazing job.
right from the company OpenAI, NVIDIA, to the companies like Reliance here, or the big of the tycoons, or they are being built by Jain professionals. So that's our intent of really having them here together. And so we started this journey about 4.5 years back, 20th February 2021 in Gurgaon, we launched a JPF Mentorship platform. And here we are to organize our first ever national conclave. So it's been a wonderful journey. Along with the journey, I think our philosophy has been that there is a real power of a word of advice and mentorship. Not everything is available through ChatGPT or YouTube podcast. Youngsters and everyone alike, we watch a number of them. But still we are at loss ki karna kya hai, right? So there's a real value in having a real life dialogue with somebody. And if that somebody is from our community who has been there, walked that path, that's an amazing power. In fact, our mentors just published the gratitude stories, 25 gratitude stories about what one advice made a difference to got them where they are. So that's our intent through mentorship platform, that nobody should be deprived of a one-to-one connection or a wisdom from the community at large. And that's what we have been doing as part of our platform. We have done about 500 such sessions, one-to-one, about 18 level-up series, about 70 odd group mentoring over the last 4 years. So that's been the journey, and that's what we intend to do. I do see that there's a huge power as part of Jito. See, अगर कोई company है जो $2 trillion की है, whether Google है, Microsoft है, or in Accenture is about $140 billion, there's a real learning we need to have as business community that कि कैसे company जो है 800,000 employees की बन सकती है, 140 countries में भी चल सकती है, how we scale up. There's a broader Jito. I think there's a lot of learning to be exchanged when we connect our broader business community with the multinational companies of the world or Indian conglomerates who are very, very big one. How do we connect the two is our intent through this mentorship platform. So yes, connecting the Jain professionals one-to-one, connect them to the broader Jito fraternity, and connect them to any individual in the community who should be getting the right advice at the right time. 4 साल पहले जब चालू किया था और आज जो है इतना वर्ल्ड चेंज हो गया है कि इट इज़ रियली माइंड ब्लोइंग कि व्हाट डू वी डू, करना क्या है. And that's where the real power of prioritizing a learning and connection comes in. So that's what we are trying to do here. Since Jito Apex is here, I do want to really have 2 requests with them. Number one, there is a huge untapped power in the professional forum and the corporates and otherwise. If you can really tap and prioritize, that would be great. And number 2, as a professional working in large corporations, making sure that we continue the journey. Frankly speaking, we started 4 years back, फिर 2 साल pause हो गया. I do want to make sure that we continue the journey, whether Vishal Jain is there or somebody X is there or who is the chairperson or not. Why should a good thing be stopped in between, right? In fact, Manoj ji की timely entry हुई है. Manoj ji, when we started mentorship platform, his question was कि will this continue? So this did pause in between, but thankfully with Kumar Pal ji there, we got together. He enabled us to take the journey forward. So my request is just prioritize the power of corporate community as well as professionals at large for Jito as a whole. And number 2, make sure that we continue the journey without interruption, because I know every 2 years there's a term change. At least we are committed to serve. All professionals here, corporate leaders are there to serve. At least we should continue. We are not looking for title. We just want to make sure we do the good work for everyone there. With that, thank you once again. And let me invite Kumar Palji Chopra. He is a JPF chairperson to take it forward. Thank you. Thank you so much, Vishal ji. Jai Jinendra. Good morning and Jai Jinendra. Respected dignitaries, Chairman Shri Prithviraj ji Kothari, Vice Chairman Shri Himanshu Jain, President Jito Apex Shri Vijay ji Bhandari, Vice President Shri Narendra Shishimal ji, and all other dignitaries present here. My dear fellow Jito members and dear professionals who are gathered here, it is both honor and privilege to welcome you to this National Conclave of Jito Professional Forum, which is first of its kind in last 7 years or 8 years which has been found. A gathering that represents not just the collective intellect of our community, but also a collective will to shape up a brighter future for the society. When Jito was conceived, the vision was clear: to unite Jain entrepreneurs, industrialists, traders, and also the professionals under one single umbrella, and to create economic empowerment and social transformation.
Over the years, the entrepreneurial spirit within the Jito has achieved a remarkable milestone. However, as we step into the future shared by knowledge and innovation and collaboration, the role of professional has become even more important. The role of professionals like doctors, lawyers, chartered accountant, engineers, technologists, educators, and many others has become more critical than ever in the evolving technological future. The world we live in today is not merely driven by capital, but by ideas and expertise, and also the Jain ethics. The Jain community has always been known for its value of wisdom, integrity, and discipline. It is these values that gives our professionals a unique edge, not only to excel in their respective domains, but also to serve in the society in a way which is both impactful and sustainable. As Mahatma Gandhi once said, the best way to find yourself is to lose yourself in the service of others. Today, as the gathering stands as a living testament to that wisdom, our commitment is not just a personal success, but to upliftment of the society at a large through leadership, knowledge, and mentorship. This conclave celebrates the spirit of such leadership and mentorship. It is a platform to bring together the brilliant minds who can mentor, guide, and uplift the next generation of professionals. I believe mentorship is not just about sharing knowledge or experience, it is also about opening doors, providing guidance in moment of uncertainty, and inspiring others to dream bigger. In today's fast-changing world, a young professional often faces a dilemma navigating rapidly through evolving industries, making ethical choices in complex situations, or balancing ambition with personal views and values. Imagine that we can impact, create with each and every experienced member present here today. Just take one aspiring professional under their wing. That single gesture could transform just not career, but a life, and by extension, our community and society at large. As professionals, we carry a responsibility to be a mentor and a role model. We also foster a culture where success is not measured merely by an individual achievement, but also many others who have empowered along the way. This professionals forum of Jito has been working tirelessly to create such opportunity for networking, skill development, innovation, and mentorship, which is our most successful vertical in the entire professional ecosystem. By far, our journey is not over. I am delighted to announce that there are next two other national conclaves which are also lined up, which is the National Judicial Conclave, which will bring together the sharpest and the legal judicial mind of our country on a single platform, allowing us to exchange ideas and insight the shape and justice of fairness in the society. The other, which is the most important aspect of our vertical, which is the bureaucratic vertical, the National Bureaucratic Conclave will unite the Jain bureaucrats who, through their service and dedication, play on an active role in nation building. These conclaves reflect a deep belief that professionals, whether in business, judiciary, bureaucracy, or science, are the true architects of this progress. I invite each one of you to use this conclave not just as meeting of minds, but as a springboard for action. Let us forge partnership, inspire collaboration, and most importantly, commit ourselves to nurturing the next generation of leaders who will carry forward the legacy of our community with the wisdom and compassion. On behalf of entire Jito Professional Forum, I extend a heartfelt gratitude to all our mentors, speakers, volunteers, participants who made this gathering possible of our community. Together, let's reaffirm our pledge to create a future where professionals are not just achievers, but are also enablers, and not just successful individuals, but also a compassionate mentors. Once again, I welcome you to the National Conclave. May this gathering ignite ideas, strengthen bonds, and inspire us to collect, shape a better tomorrow for our community and for our nation. With this, I take your leave, and I will now request our apex dignitaries to come join me for the lighting of lamp ceremony. So, Shri, entire apex dignitaries, Prithviraj ji, and come.
the CFO of Reliance Jio Infocom. So he'll deliver the keynote address after the inaugural session is over. So I now invite the Secretary General of Jito Apex, Shri Lalitji Dangi, to say a few words. What a wonderful conclave, actually. Have the top 25 professionals over here. They're the first national conclave of corporate professionals. One important thing for the professional, that what is the power of professional? The entire industry, all industrialists are based on the power of professionals only. I tell you one incident. Chaturvedi, who was actually the auditor of Reliance, he is a good friend of mine. We were sitting one day. He said that if I tell Dhirubhai Ambani to jump from the 4th floor, he will jump immediately, because he knows that there is some stuff actually on the ground which will save him like that. So that is the power of a professional, that everybody relies on the capacity of the professional and the advice of the professional. Another very important thing is that when we are all in a Jito, what is Jito's power actually? Jito have businessmen, Jito have traders, Jito have all entrepreneurs. But do you think that this Jito can work without professionals? Professionals are heart of Jito. Without heart, actually, the work cannot work. Your body cannot work. And that is the reason the entire Jito is working in collaboration with the JPF properly as such. And I want to thank you, the entire JPF team. They have worked very hard actually to make it a flying vertical of Jito. And they have organized so many events in the last 1 year time, and which have given a lot of knowledge, incubations, everything to all members of our JPF. Another very important thing is that, what is the importance of your professionals actually? Whether anybody has realized that how the professionals work? If you talk about chartered accountant, they give you the financial discipline. If you talk about the advocates, they help you in the justice. If you talk about the engineers, they actually help you in the technology, in the improvement. The entire world is based on now the technology actually on the engineers, and they are contributing a lot of things for the professionals, for this industry also. If you talk about the doctors, how do you help you? How do you take care of your health as such? So these all 4 professionals are the keystone of our entire society and entire Jito itself. Without this, it is very difficult to work in any society as such. Only 2-3 things, because I am given 2 minutes time actually. But my president will speak more. He has a timer actually for me. All the time actually he sees that how many minutes I will speak for that. So only one thing just I want to tell you, that the professionals have to play a very important role in the life of this Jito also. They have to see that how they can do their social responsibility towards all the members of Jito, how they can make programs for our traders, for our businessmen, whether on GST or in income tax or any other thing wherever they are required, or SAP or AI, whatever is there, so that they get the right information at the right time actually. Secondly, the research and development, where the Jito is still missing actually. Till now we have not done anything as far as the research and development is concerned. We are just giving the lectures on the platform and just showing them that what is to be done. But if the JPF can prepare some research papers, some research report, which can be beneficial for the entire Jito, then it will have a lot of impact on that. And more thing, that how you are doing the mentoring. You are just giving all knowledge to your own members, to our members also. You are going to all the chapters, giving a lot of information to all the chapter members. But what is required here is how you can do your mentorship to the youth and the ladies also. Youth and ladies are becoming a lot of entrepreneurs in our Jito community. It is necessary that they should also be mentored properly. That's why the Jito will grow faster actually. And I compliment Kumar Palji and his entire team for taking this JPF to the height. And I saw in the next 12 months also you will be having a lot of program. And this mentor program, the faculties which you have bought on all the time are the excellent faculties actually. I met in the morning Pankaj Jain from the Microsoft. The way actually he had the ideas what is to be done for Jito is excellent actually.
And we should get the ideas and should implement in the JITO's activities, which will propel the JITOs to a largest level essence. Thank you very much. Thank you so much, Lalitji, for the inspiring address. I now request the President Apex of JITO, Shri Vijayji Bhandari, to address the gathering. Jai Jinendra, happy morning. Happy morning. Thank you. JITO Professional Forum, National Conclave. We were waiting actually from long time. Thanks to the entire team and with a loud applause to Kumar Pal Chopra and his entire team. बहुत सारी बातें हुई कि विदाउट प्रोफेशनल आज इंडिया की इकोनॉमी हम लोग पहले नंबर पे नहीं लेकर जा सकते. यू पीपल आर द हार्ट ऑफ द इकोनॉमी. अभी अभी हमारे ललित जी ने कहा कि धीरू भाई को अगर कहा जाए, किसी प्रोफेशनल ने कहा कि चौथे माले पे कूद जाओ तो कूदेंगे. उसके पीछे रीजन ये है कि पीपल बिलीव इन यू, और आपके बिलीफ के ऊपर ही आज हम लोग सारे काम कर सकते हैं. और जीतो के बारे में अगर कहा जाए तो जीतो का अगर बेस आने वाले समय के अंदर है, वो सारे आप लोगों के हाथ में है, आप ही लोगों के प्रोफेशनल्स के हाथ में है. विदाउट यू नथिंग इज गोइंग टू हैपन. एआई का जमाना है. आने वाले समय के अंदर एवरीबडी इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट वर्ल्ड. अभी विशाल जी ने बताया कि 4 साल के अंदर दुनिया बदल गई. सही मायने में आने वाले 2 सालों के अंदर और दुनिया बदलेगी. लेकिन हमारे पास जब तक आपके जैसे सारे लोग हैं, ऐसा कहा गया कि भाई 1 साल हमारे प्रोफेशनल फोरम ने बहुत अच्छा काम किया, 2 साल का पॉज आ गया. लेकिन मैं वापस एक बार कहना चाहूँगा कि लीडरशिप जो अभी हमारी आई है, ये लीडरशिप ने 1 साल का मंथन किया है. शायद इस मंथन के बाद आने वाले 1 साल के अंदर आपको जो प्रोफेशनल फोरम का जो स्पीड दिखेगा और आने वाले समय के लिए सालों तक इन लोगों ने जो मतलब बेस बनाएंगे, तो ये आने वाले जीतों के लिए बहुत अच्छा रहेगा. मैं आप सभी को, जितने भी यहाँ पर प्रोफेशनल हो, मैं सभी से विनती करता हूँ कि मैक्सिमम, क्योंकि जेबीएन हमारे बिजनेसेस के लिए है, बट जेपीएफ इज फॉर द प्रोफेशनल फोरम एंड यू पीपल कैन टाई अप एंटायर वर्ल्ड, बिकॉज जीतों का फैलाव इतना बड़ा है. आज हम लोग लगभग 86 सिटीज के अंदर है. शॉर्टली with the grace of our chairman Prithviraj Kothari, we are going to achieve 108 chapters in India and we are going to achieve 50 chapter globally. तो इतना बड़ा नेटवर्क अगर आपको कहीं मिलता है तो सिर्फ जीतो के अंदर मिलता है. उसका आप पूरी तरह से यूज कीजिए. आप जैसे जेबीएन है वैसे ही जेपीएफ के माध्यम से आप बिजनेसेस आप एक दूसरे के साथ कर सकते हो. तो आने वाला समय के अंदर मैक्सिमम ट्राई कीजिए. दिस ईयर कुमार पाल जी, राहुल जी, मैं आपसे एक विशेष अनुमोदन करूंगा. इस 12 महीने के अंदर अगर कुछ चलना चाहिए तो सिर्फ जेपीएफ ही चलना चाहिए. जीतो प्रोफेशनल फोरम, जीतो प्रोफेशनल फोरम एंड जीतो प्रोफेशनल फोरम. थैंक यू फॉर कॉलिंग अस एंड ऑल द बेस्ट. थैंक यू. Thank you so much, Vijayji. We'll not let you down on this word and we'll give you this commitment on stage. I now invite Shri Himanshuji Shah, who is the Vice Chairman of JITO Apex, to say a few words. जय जिनेंद्र. प्रभु महावीर के चरणों में कोटि कोटि वंदन. विजय जी, आपने जो बोला ना कि 1 साल की नेट प्रैक्टिस कर रहे थे कुमार पाल जी. क्या होता है कि बड़ा जब खेलना होता है ना तो नेट प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है. तो कुमार पाल, मैं तुम्हारे बिहाफ पे बोल रहा हूँ कि तू नेट प्रैक्टिस कर रहा था और अभी तू जो शुरुआत करेगा तो सारे वर्ल्ड कप ले आएगा, ऐसी मैं आशा रखता हूँ. मैं सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि शुरुआत होनी ज़रूरी होती है लाइफ में. एक बार शुरुआत होती है तो गाड़ी कहीं नहीं रुकती है. और सबसे अच्छा बार जब मेंटर का मैं लिस्ट देख रहा था तो अपने जैन प्रोफेशनल कहाँ नहीं है. जैसे आज इनको राजीव जी को मालूम चला, तो ऐसा कितने लोग हैं जिसको हम पहुंच नहीं पाए. तो प्रोफेशनल फोरम का काम ही यही है कि आपको इन सबको लेके आओ, क्योंकि आज की तारीख में व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट, ललित जी ने जो बोला कि प्रोफेशनल के बिना, क्योंकि कोई भी बिजनेसमैन को ये मालूम है कि विदाउट प्रोफेशनल कुछ पॉसिबल नहीं है. विजन दे सकते हैं लेकिन एग्जीक्यूशन प्रोफेशनली कर सकते हैं और सिस्टम ड्रिवन प्रोफेशनली ला सकते हैं. तो ललित जी ने जो बोला वो सही है कि भाई फाइनेंशियल, लॉयर, डॉक्टर सब चाहिए, लेकिन आज की तारीख में एक और रिक्वायरमेंट है प्रोफेशनल की. और एज अ जैन आप सबकी जिम्मेदारी भी है कि आज का यूथ
पहले टाइम में इतनी कंपटीशन नहीं थी। आज पैसा मिल जाता है लेकिन विजन नहीं मिलता है। कैरियर कहाँ से शुरू करनी, कैसे आगे जाना, एक लेवल पे आगे जाके आदमी रुक जाता है, क्योंकि हमें कॉम्पीट करना है अभी वर्ल्ड से। पहले इंडिया में ही कॉम्पीट करते थे, अभी वर्ल्ड से कॉम्पीट करना है, सब लोग आ गए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी मेंटर है, कि अपने यूथ और जो बिजनेसमैन है उनको आपकी बहुत ज़रूरत है। आप आगे आइए, आप अपनी मेंटरशिप दीजिए, आप अपना भी ग्रोथ कीजिए। जीतो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ जो भी आया है उन सबका ग्रोथ हुआ है। हम लोग 18 साल से जुड़े हुए, हमें मालूम है कि जीतो को हमने जो दिया उससे 100 गुना ज़्यादा जीतो ने हमें दिया है, चाहे बिजनेस हो, चाहे रिलेशन हो, चाहे एनीथिंग। तो मैं आप सबको भी बोलता हूँ, आप कोई अगर पहली बार आया है तो आप बार बार आओगे, मेरी गारंटी है आपको। और आने के बाद आपको ये लगेगा ये मेरा जीतो है, मेरा जैन परिवार है, मेरे प्रभु महावीर के अनुयायी है, मुझे ये काम करना है, ये फीलिंग आपको आएगी। तो मैं आप सब प्रोफेशनल को बोलता हूँ कि यूथ को आप गाइड कीजिए। आज आपकी गाइड की ज़रूरत है। पैसे देने वाले बहुत हैं, अगर कोई प्रोजेक्ट लाता है तो पैसा दे देता है, लेकिन गाइडिंग की बहुत ज़रूरत है। और एक जीतो प्रोफेशनल वर्टिकल थोड़ा सा मतलब स्टार्टअप नहीं हुआ था, लेकिन आई कांग्रेचुलेट टू यू एंड योर टीम कि पूरा स्टार्ट कर दिया आपने, और मुझे मालूम है कि पूरे साल में तुम बहुत धमाका करेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। डीआईसी वर्किंग कमेटी के महावीर जी, डीआईसी हमारे मनीष जैन और कुमार पाल जी, आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। मैं देखता हूँ कि हम लोग जैन संख्या में कम हैं, सब मानते हैं, बट हम लोग कहाँ पे नहीं हैं। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री आप उठा के देख लीजिए कि जहाँ पे जैन नहीं है। और ये बहुत प्राउड फील होता है जब हम एक किसी से मिलते हैं। आज सुबह भी हम मिल रहे थे तो बहुत अच्छा लगता है, एक अपनापन लगता है। और प्रोफेशनल फोरम जैसे हम बॉम्बे में देखते हैं कि डॉक्टर फेडरेशन का होता है, 1500 से 2500 डॉक्टर लोग एक साथ में जमा होते हैं, सिर्फ मैं जैनों की बात कर रहा हूँ। फिर एडवोकेट फोरम है जिसमें दुनिया भर के सभी एडवोकेट एक साथ में मिलते हैं। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट फोरम है जो हर साल होता है, जिसमें सब चार्टर्ड अकाउंटेंट साथ में मिलते हैं। प्रोफेशनल फोरम के ज़रिए हम लोग यही चाहते हैं कि कैसे जीतों के साथ में प्रोफेशनल को जोड़ा जाए। इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतनी बड़ी नेटवर्किंग है, और जिस हिसाब से दुनिया चेंज हो रही है, अगर आप देखोगे कि जिस हिसाब से अगर आप 25 साल पीछे चले जाओ तो ऐसे लगता था कि, और अभी के टाइम में हम देखते हैं तो इतना चेंजेस फास्ट चेंज हुआ है जो 20-25 साल के अंदर। और आगे 10 साल में मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरा का पूरा टर्न अराउंड हो जाएगा। जितनी फास्ट से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, जितने फास्ट से डेटा अवेलेबल हो रहे हैं, एआई बेस है, इतनी चीज़ें फास्ट आ रही है, तो हम लोग को भी चाहिए कि हमारे सब प्रोफेशनल साथ में जुड़ के कि हम जैनों को कहाँ पे जाना चाहिए और 10 साल हमारी इंडस्ट्री को कैसे उसके साथ में चेंज होना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में मैंने देखा है समय के साथ में चेंज होना पड़ता है, हमारी सोच काम में नहीं आती। आज की प्रोफेशनल की सोच बहुत बियॉन्ड है, उसके आगे चलती है, क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। और हम खुद चाहते हैं कि प्रोफेशनल के साथ में जुड़ के सबकी ग्रोथ कैसे बढ़े। एक से एक आइडियाज़ होते हैं, एक से एक इनके सिस्टमेटिक होते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग इस साल वर्ल्ड जैन इकोनॉमिक फोरम, जस्ट लाइक ए डावोस, उसकी हम लोग इस साल से शुरुआत करने चाह रहे हैं। अगले साल हमारा ये प्रोग्राम अबू धाबी में हम करने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें दुनिया के टॉप मोस्ट प्रोफेशनल वहाँ पे होंगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटी होगी, कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, और टू द इन्विटेशन हम लोग उसमें लोगों को इनवाइट करेंगे। तो हमें चाहिए, देखो जैनों के पास में पैसा तो बहुत है, पर लगाने के लिए हमारे पास में इंस्ट्रूमेंट नहीं है, और पैसे हमारे बैंक में खाली 6% में, उसमें भी टीडीएस काट के हाथ में कुछ आता ही नहीं है। तो नो डाउट है अभी लोगों को एक चेंज हो गए। अभी लोग अभी आप एफडी नहीं करने की बजाय में इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ईटीएफ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, गोल्ड सिल्वर की में। अभी इन्वेस्टमेंट का जरिया चेंज हो गया है। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि डेटा अवेलेबल हो रहा है। आज किसी भी महिला को अभी सोने के भाव नहीं पूछती है, क्योंकि CNBC जी बिजनेस में सोने के भाव दिख जाते कि डाउन है कि टिक ऊपर टिक है। तो डेटा चेंज होने से बाद में वर्ल्ड चेंज होते जाता है। तो मैं चाहता हूँ सब प्रोफेशनल से आप लोग साथ में जीतों के जुड़िए, और जीतों को और
जितनी फास्ट रफ्तार से आप लोग आके लेके जा सकते हो दूसरा कोई नहीं लेके जा सकता है। आज यहाँ पे बिजनेसमैन हर एक फील्ड के हैं। आप पूरे जैसे हमारे प्रेसिडेंट साहब और जनरल सेक्रेटरी साहब ने कहा हम लोग कहाँ पे फैले हुए नहीं हैं, इतनी अपॉर्चुनिटी है, इतने पैसे हमारे पास में है, बट हमारे पास में अभी भी वैसे लगते हैं ना हमारे जैनों को कभी भूख नहीं मिटती है और लोगों को चाहिए कि और कुछ नया करे, नया इन्वेस्ट करे। तो मैं आप सब प्रोफेसर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग जीतो के साथ में जुड़िए। आपके कोई भी आइडियाज़ हो वेलकम है। हम लोग तो जितने आइडियाज़ अच्छे आते हैं उसको हम लोग अडॉप्ट करते रहते हैं। और सबसे धन्यवाद देता हूं, आज मैंने सुना कि 30 प्रोफेशनल लोगों की टीम यहाँ पे आज आई है। पूरे दिन ज्ञान का भंडार मिलेगा। और अभी तो क्या है बहुत जगह पे प्रोग्राम चल रहे हैं, नीचे दाजी जी आए हुए हैं तो वो काफ़ी वहाँ पे लोग काफ़ी बिजी हो गए। पर मुझे लगता है कुमार पाल जी पूरा पैक होना चाहिए और जो हुआ है उसकी हमें ज़रा एक पूरे एक वीडियो या जो भी होगा वो आप हमको एक प्रोवाइड कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप लोग सब लोग यहाँ पे आए, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। Request the entire Apex executive for one photograph with all the mentors alone. So I'll request all the mentors who are present here today. इस कम्युनिटी में होने के 2 फायदे हैं और 2 नुकसान हैं। फ़ायदा ये है कि मैं जैसे आज सुबह जब यहाँ नाश्ता हो रहा था, कुमार वील हैव टू सेटल प्लीज, बैठिए आइए। लेडीज एंड जेंटलमैन वी नीड टू फाइंड सीट्स अगेन। थैंक यू। विशाल कहाँ पे गए? ने बोला कि ऊपर आपको वेजिटेरियन खाना सब तैयार है। मैंने जाते से बोला और जैन साहब क्या हाल है? तो 15 लोग ने बोला मैं ठीक हूँ जी, मैं ठीक हूँ। तो मुझे अचानक रियलाइज़ होता है कि आप जीतों में आ गए हैं। तो सब जैन साहबों को दोबारा नमस्कार, जय जिनेंद्र। मेरे गुरु शायर साहब, आप में से कोई शेर व शायरी का शौक रखता है या मतलब जबरदस्ती बुला लिया है? ओके ठीक है, चलो नहीं ठीक है, चलिए अब आपके पास ऑप्शन भी क्या बचा है। तो मेरे गुरु शायर साहब है, उनका नाम है अंबर खरबंदा। आप कभी अगर रेखता.com पे जाएं तो आपको उनका कलाम वहाँ पे मिल जाएगा। और वो कहते हैं मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। तो बात करनी क्यों जरूरी है और ऐसे फोरम्स की हमें जरूरत क्या है? तो मुश्किल को समझने का तरीका निकल आता, तुम बात तो करते कोई रास्ता निकल आता। लेकिन मेरे लिए ए दोस्त बस इतना ही बहुत था, मेरे लिए ए दोस्त बस इतना ही बहुत था, जैसा तुझे सोचा था तू वैसा निकल आता। तो बात तो करनी ज़रूरी है, लेकिन ऑथेंटिक, सच्ची, ट्रांसपेरेंट ऐसी बात करनी भी ज़रूरी है कि जो सब तक पहुँचे। मैं इस अब महफिल को आगे बढ़ाने के लिए बुलाना चाहूँगा हम ही में से बहुत ही कमाल के जो एक सज्जन हैं। ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए संयोग जैन जी का। कहाँ पे हैं आप ज़रा धीरे धीरे आना, क्योंकि आपका एक छोटा सा रेज्यूमे मुझे भेजा गया था, मैंने उसको और छोटा कर दिया है। लेडीज एंड जेंटलमैन, धीरे धीरे चलते रहना पड़ेगा आपको। जैसे वो वॉक होती है ना मॉडल्स जिसमें आते हैं, तो जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ आप मेरी तरफ आते जाइए। लेडीज एंड जेंटलमैन, संयोग जैन, फाउंडर एंड प्रिंसिपल कंसल्टेंट और धीरे धीरे फ्रंट लाइन कंसल्टिंग, 10 लाइनें और हैं। 30 years of global experience in leadership development and organizational building, alumnus of IIM Bangalore, Thunderbird, University of Rajasthan. He offers cross-functional expertise, अंग्रेजी बहुत है. He has worked across US and India and for several years at MetLife in the L&D domain, recognized by NHRD and TIS Leap Vault. He is the engine behind JPF, passionate about mentorship. Ladies and gentlemen, मैंने 3 लाइनें छोड़ दी हैं, अब जल्दी आ गया था। विनीत जी के बाद आना कितना मुश्किल हो सकता है। मैं आपको JPF से पहले मैं आपको कुछ और बात बताना चाहूँगा। जीतो कनेक्ट का जो थीम है इस बार, वो है पावर ऑफ वन। पावर ऑफ वन के कई मैसेजेस हो सकते हैं, कई मीनिंग हो सकते हैं। पावर ऑफ वन, वन आइडिया। आप में से शायद ज़्यादातर तो भूल गए होंगे, द ग्रीन रेवोल्यूशन वॉज वन आइडिया। It could be circumstances. बहुत सदियों पहले, कई दशक पहले,
किसी ने एक यंग एडल्ट को ट्रेन से धक्का दिया और वो प्लेटफॉर्म पे आके गिर गए। जब वो धक्का दिया था तो वो थे M.K. गांधी। जब वो उठे तो उठे एज महात्मा गांधी, one of the greatest freedom fighters of our country. Or power of one can be a mentorship conversation. And that is the reason why we are here. The conversation can be life-changing. It can be with a parent. It can be with a sibling. It can be with a teacher. It can be with a manager. Or it can be with a community person. Let me share with you one such real example of mentorship. A family migrated from Pakistan and they settled in Kolkata. The father was a business person. And one of the young child got admitted in a very prestigious school in Kolkata. And the name of that school was St. Lawrence. The entire family was elated. A year went by, and one day, the principal of the college, the school, called the father of this young child. Father was not very conversant in English, so he requested another family member to come with him. And it was the older cousin of the young child. They were sitting across the table in front of the principal, and the principal very politely said, "There is nothing wrong with your child, but I'm sorry, he cannot cope up with the medium and the curriculum." Now, I'm happy to give him a transfer certificate. If you insist that he should continue in the school, then he will have to repeat the class. And by the way, very politely he continued, "There's no hurry. You have about 75 minutes to make the decision." Of course, the parent, the father, he thought taking the transfer certificate would be a better option. But at that time, the older brother saw something in the eyes of that young child. He took him aside and asked him, "What do you want?" With tears in his eyes, the young boy looked into the eyes of the cousin and said, "I want to stay in St. Lawrence." The cousin said, "But do you know the emotional stress which will come with it?" The boy looked up again and said, "I'm ready to face the challenge." The cousin placed his hand on the shoulder of this young boy and told him, "I'm with you. During this difficult time, I am going to be with you." Ladies and gentlemen, that is history. From there, from that school came the college. From the college came the corporate world. And from the corporate world, success just followed this individual. And why not? He was a learner. He is a learner. He never hesitates to learn from the people, his seniors, his peers, people who are younger than him, and even his grandchildren. He's an avid reader. He reads a book, one book every week. And he just not only reads that book, he also identifies the top 10 things which can be implemented from that book. He aligned the commercial and financial division for his company so that they are consistent with the vision of the company, which is digital first. And that has contributed to the growth of our country. Ladies and gentlemen, he has given more than 50 keynote speeches around the country with some of the best institutions of our country. He's a father. He's a devoted family man. He's an adoring grandfather. Sushma ji,
He is the President and CFO of Reliance Jio. Do you know whom I'm talking about? Yes. Are you just going to say yes? Or you are going to give him a Hyderabad wala welcome? Ladies and gentlemen, Mr. Rajni Jain.